गुजरात के अमरेली जिले की चलाला नगर पालिका से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। चलाला नगर पालिका से के अध्यक्ष पद के चयन की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के आयोजन के चलते लिया गया है। जानकारी के लिए अनुसार अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से टालते हुए अब आगामी 16 तारीख को नए अध्यक्ष के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति टलने से नगर पालिका की राजनीतिक गतिविधियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी पार्षदों और राजनीतिक दलों की नजरें अब 16 तारीख पर टिकी हैं। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चलाला नगर पालिका का अगला अध्यक्ष कौन होगा। संवाददाता राठौड़ महेंद्र भाई की खास रिपोर्ट। नगर पालिका चलाला ने आज प्रमुखनी बपोरे 12 वागे એટલે 9 તારીખે 12 વાગે પ્રમુખ તરીકેની ચૂંટણી આજે જાહેર થયેલી હતી। અત્યારે ચૂંટણીના સંદર્ભમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની કાર્યવાહી ચાલુ છે, ત્યારે તમામ અધિકારીઓ વાઇબ્રન્ટમાં રોકાયેલા હોવાથી આજની તારીખ મુલતવી રાખી છે અને આવતી 16 તારીખ બપોરે 12 વાગે આ ચૂંટણી નગરપાલિકાના પ્રમુખની થવાની છે। માનનીય કલેક્ટર સાહેબે જાહેર કર્યું છે અને આજે લોકોને બધા નગરપાલિકાના તમામ સભ્યોને જાણ કરી આવતી 16 તારીખે 12 વાગે ત્યાં નગરપાલિકા હાજર રહેવું અને પ્રમુખ તરીકેની ચૂંટણી થવાની છે। તો એને તમામ લોકોને તમામ સભ્યોને એજન્ડાઓ બજાવી દીધા છે।